Bismillahirrahmanirrahim. Let me begin with the recitation of the Holy Quran. Mr. Hussain Ahmed will recite us few verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, please let me rise for the national anthem. Worthy chief guest of this ceremony, Vice Chancellor, Qaid-e-Azam University, Professor Dr. Muhammad Ali. Honorable guest of honor, ex-Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Mahmudul Hasan Bhatt. Distinguished guests, scholars, researchers, participants and presenters from all over the country and abroad, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a good morning. On the behalf of my department and Allama Iqbal Open University, I welcome you all on the closing ceremony of our 2 days 6th International Conference on Nanomaterials, Modeling and Simulation 2021. Special thanks to our guest from abroad as our keynote speaker, Professor Dr. Khalid Hafiz. Dear guest, today is our last day of the conference and we feel generous for all of you who made this conference a success. Scientists who are an asset of our country, like Professor Dr. Ataur Rahman, Professor Dr. Richard Becker, Professor Dr. Zikriya Bhatt, Professor Dr. N.M. Bhatt, Professor Dr. Muhammad Zafar Iqbal, Professor Dr. Sayyid Javed Khurshid, and many more, made it inspiring by their fantastic words of knowledge and enriched with flavors of different aspects of research in physics. And we all pray that you are going heavier than you arrived. We wish that this conference will forever have a place in your heart. Dear colleagues, I would now like to call upon our very special guest and presenter in this conference from Multan, Dr. Malika Rani, to share her experience and views here. सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी सर ज़फ़र इलियास साहब का कि उन्होंने हमें इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स को, एमफिल पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट्स को और हमारे जो बीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने जो पूरा साल जो उन्होंने काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब ने जो हमारा रिसर्च ग्रुप है उसने इस साल 15 पेपर्स पब्लिश किए हैं
और 3 PhD स्टूडेंट ने थीसिस सबमिट करवाया है, और जो तमाम पेपर्स थे वो 5+, 4+ इम्पैक्ट फैक्टर में गए। तो और जो हमारे उन्होंने 5 पेटेंट भी रजिस्टर्ड करवाए हैं, डिवाइस फैब्रिकेशन तक बच्चे गए हैं। तो बच्चे चाह रहे थे कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम अपने रिसर्च वर्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को हम प्रेजेंट करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं, और साथ थोड़ा बहुत सर ने ट्रिप वगैरह का भी ऑर्गेनाइज करवाया, वो भी बहुत अच्छा रहा है। अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह स्पीकर सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बच्चे तो कल सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, वो कहते जी हमने तो सर के लेक्चर सारे सुनने, बहुत एक्साइटेड थे। और सर थैंक यू सो मच। आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हमने भी ऑर्गेनाइज करवाई है, 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि इस साल हमने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो थी फिजिक्स डिपार्टमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने ऑर्गेनाइज करवाई हैं। हम सिम्पोजियम भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वर्कशॉप्स भी, और हम आप सबको भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग आएँ, हमारी कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो नेशनल लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें हमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस रही हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, और हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मलिका रानी। और एक बात आप भूल गई कि आपने हमें ये नहीं बताया कि हमने जुलाई और अगस्त में आना है, जब आपके आम बड़े अच्छे होते हैं। Thank you very much. Now I would like to call upon a very important personality in these chain of conferences, an interim deputy dean in the Montfort University, Leicester. He's having an academic career of 25 years in teaching, research, educational management, and technology transfer experience across disciplines in the UK. He has his expertise in digital transformation, artificial intelligence. He earned Chancellor Award for Excellence in Research and Award for Exemplary Leader. He is having more than 2,000 citations to his research work. Professor Dr. Khalid Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mr. Chief Guest, the Honorable Professor Muhammad Ali Sahab, and Professor Mahmood Haq Sahab, Professor Dr. Zafar Ilyas Sahab. It is my honor and pleasure to be part of yet again in this series of conferences which has been organized here at the Allama Iqbal Open University. Actually, I think it is my 5th series of conferences which I've been attending, and I've always been very joyful occasion. And I applaud the work which has been done in here. And I think there was some understanding that this has been 11 years, this series of conferences has been established here. So, I mean, as I say always, कि ये फिजिक्स का मेला है, लोग सजाते हैं मेला, this is physics मेला. So people should celebrate, and as a researcher, as a academics, as a teacher, as a student, you know, this is a joyful occasion for us. We should be very happy celebrating this, what we do all day long. I think we have dedicated our life 24/7 to the promotion of physics and technology in its application. So I think this is something we should feel very proud of, and we should feel very happy to having a platform which is promoting this series of conferences. And I understand with the effort of Allama Iqbal Open University and Dr. Zafar Ilyas Sahab, I think it is maybe 104th conference, 106th conference, thank you for correcting me, and which you have organized in this space of time. So even as an international university, even I'm coming from international university, we do not think about organizing more than one conference in 2 years, and having these many conferences and workshops in such a short space of time, it is very commendable indeed. And I understand it's not only yourself, you know, obviously you have backing from your seniors, the resources available, your own personal time. I know you have to work
12 hours, 14 hours if you want to organize a conference like this. And you're full team members, so I just applaud, name some of them, and forgive me if I miss out some of them, and all doctors. So I'll start with Dr. Harim Mufti, Dr. Tayyiba Aftab, Suraya Mukhtar, Uzma Noshin, Dr. Tariq Jan, Dr. Abdul Jalil, Dr. Zulfikar Ali Shah, Dr. Hussain Ahmad, and Dr. Athar Hussain. So the team members, all of you, this is the engine of the conference. People don't see the work and efforts you put in there. And the presentations I attended were very commendable. People talk about nanotechnology, and now we understand the young minds have to think about pico-technology from here on. But you are developing your platform, so you start with the nanotechnology, and once you mature with the nanotechnology, you have to go on thinking about the pico-technology. And I think two things you take away from here. You should think about the application side of it and how you can involve the end users, the consumers, part of your research. So you're working in a lab, which is very good, you're inventing something, but do keep in mind the complete ecosystem of innovation. So if you get involved with the industry people who will be your end user, this is a lot more chances the success what you can have. As I was saying yesterday, that maybe out of 1,000 innovations, one invention hit the market. And I think you should be thinking about from day one that who's going to use my invention and how I'm going to utilize it for the benefit of society, benefit of companies. And this is what you should be thinking about within fitting yourself into the whole system. And if I recall what Dr. Atar Rahman Saab said yesterday, to inspire the young minds. So I'll just, if allow me, one or two ashar I say from Iqbal, that अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं. So for me, you are the young minds who should be thinking about your own place in the world, your own space in the society. Being a good inventor, being a good innovator, this is a good thing, and being a good human being, how you fit in the society, you should be thinking about taking this banner of physics, banner of innovation, and banner of personal attitude to become successful. And I think this is what I think you should be taking away from this conference. So I thank you for your invitation, Professor Iqbal and the Allama Iqbal Open University, which I've been coming in. This is my second home. And thank you for your attendance, and I hope that this conference will remain successful for many years to come. All the best. Thank you very much, sir. And we are honored for your words, for your valuable remarks. और वाकई physics department is one of its own kind. And I say this कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है. Now I would call upon the stage the chief organizer of this event and chairman department of physics, Professor Dr. Syed Zafar Iyas, for the concluding remarks. Honorable Vice Chancellor AIOU University, Professor Dr. Muhammad Ali, and Chief Guest of the occasion, Professor Dr. Mahmood Hassan Butt, Chief Guest of Honor of the occasion, and Honorable Dr. Khalid Hafiz from UK, Honorable Deans, Professors, respected keynote speaker, invited speaker, speakers, and dear students, Assalamu alaikum. अल्फाज तो नहीं है शुक्रिया अदा करने के. वीसी साहब नहीं आज कई मीटिंग में गए हैं. उनकी सपोर्ट, उनकी फाइनेंसिंग, हर चीज़ में हाँ करना. मैंने डिपार्टमेंट में उनके 3 साला दौर में more than 500 million rupees के इक्विपमेंट्स खरीदे.
اس ٹائم اس کمنگ ایئر میں 128 ملین کے مزید اکوپمنٹ خرید رہے ہیں. کمنگ بجٹ میں ہم ایک نئی لیب بنا رہے ہیں جو پاکستان میں یونیک ہوگی رینیوبل انرجی میں. ان کے لیے انہوں نے ابھی سے ہی وعدہ کیا ہے کہ 168 ملین اگلے سال میں مجھے دیں گے. سو دیٹ از وٹ دا جرنی آف دا فزکس از. مجھے 11 سال ہوئے اس یونیورسٹی میں. 11 میں ہم نے 106 یہ کانفرنس ہے جس میں ہم نے ٹریننگ ورک شاپ کانفرنسز اور سیمینار کرے 106. سو دیٹ از بیکاز آف دا سپورٹ آف دا یونیورسٹی. میری ٹیم یونیورسٹی کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپورٹ. اپنی ٹیم کی تو میں تعریف نہیں کر سکتا. انہوں نے دن رات جس طرح سے محنت کی ہے اور جس طرح سے اسے چلایا ہے, اس طرح سے کچھ جو ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں اس میں اور ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں. ہر کانفرنس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے پروجیکٹس بھی ڈسپلے کرتے ہیں. سر اس دفعہ بھی 25 پروجیکٹس ہماری یونیورسٹی کے تھے اور ڈاکٹر ملکہ کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کے اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے اور کوئی 30 پروجیکٹس وہ بھی لے کے آئے تھے. اس میں بھی ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز اور کوئی 2 اسپیشل پرائز بھی دیے ہیں اس میں. تو یہ بھی ایک ہمارے کانفرنس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو اپریسیشن کے لیے ہم ان کے پروجیکٹس کرواتے ہیں فائنل ایئر میں اور پھر اس کی ڈسپلے کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے جو ہم ہر سال اسٹوڈنٹ کی اپریسیشن کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈپارٹمنٹ آف فزکس بہت سارے فنکشنز کرتی رہتی ہے تاکہ یہ تو اس کو کہتے ہیں کو کریکولم, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کریکولم ایکٹیویٹی ہے کہ ان کی گرومنگ کی جائے ٹو ورڈز دا ایٹیچیوڈ. تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی ہم نے کی ہے. تو میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ایوری ون. اگر نام گننا شروع کروں تو بہت کم ہے. اسپیشلی ٹو دا چیف گیسٹ. یہ سر بھی ہمارے کوئی میرے خیال میں 3-4 کانفرنسز میں آ چکے ہیں. کبھی اوپننگ میں چیف گیسٹ ہوتے ہیں, کبھی کلوزنگ میں. بلکہ فزکس ڈپارٹمنٹ نے ایک جرنل شروع کیا تھا, پاکستان جرنل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, تو سر نے اس کی بھی انوگریشن سر نے کی تھی. تو آج بھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, تو سر ویری ویری مچ تھینکفل ٹو یو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اسپیشلی ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری ون, اسپیشلی ٹو دا یہ جو باہر سے جتنے بھی پارٹیسپینٹس آئے ہیں اور کی نوٹ اسپیکر اور انوائٹڈ اسپیکر. میڈم آپ کا اسپیشل تھینکس اور آپ کے اسٹوڈنٹ کا اسپیشل تھینکس کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری ون. تھینک یو. Now it's the turn of a very sweet personality, Professor Dr. Mahmoodul Hassan Bhatt, ex-Vice Chancellor Allama Iqbal Open University. But sir, آپ کے لیے الفاظ نہیں ہیں, بس آپ آ جائیں. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure for me not just to tell you what Allama Iqbal Open University has been doing in the sciences. There's a long history, but I'll be very brief. First of all, I welcome my friend and colleague, Dr. Muhammad Ali. He'll be giving you a formal keynote speech. But I'll only say that what you have done so far is the beginning. It's not the end. Inshallah, today and yesterday, you've been talking about nanotechnology or nano and its modeling, simulations, and the impact of nano ideas
in the world of science. I'd like to share with you what the physics department is planning on doing. The next such big conference will be focusing on emerging sciences. And that'll be a much bigger platform, and it'll be a much more demanding kind of activity. I'm not a scientist, but I've been reading lately about what's happening in the world of science. 4 things I'd like to share with you. Today we have a new platform. It's known as Metaverse. Metaverse is taking almost all the different sciences available to us, including Nano, and also artificial intelligence, which is a broad field, and also taking these words today, ideas of an innovative nature tomorrow, and these are the ways through which the mankind and the world of science is going to be transformed. What I've read tells me that artificial intelligence and metaverse are the key directions of the emerging sciences. And my hope is that the next conference that Allama Iqbal Open University Physics Department is going to hold will focus on some of those things. Because the future is not going to be narrowly oriented to disciplines. The future is more involved in multidisciplinary research. So what you young scholars and scientific researchers are standing at a threshold. And that threshold is demanding that we come out of the narrow disciplinary limits and look at how we can not only benefit from, but add to the realm of artificial intelligence and also metaverse. New internet is emerging, Internet of Things, it's already here. And I give you just one example, how Cambridge University, where Professor Iqbal is coming from, UK, undertook a remarkable experiment, and it's now a reality. Rather than just buying the faster and faster computing for their campus, they set up a center for fast computing. And they decided, rather than going to Japan to get the fastest or USA, they are integrating their computers so that they could have extremely fast computing speed on campus. It's available free of cost to Cambridge University researchers, but they are charging significant fees from industry and business. This is something that we have to start exploring. AIOU University, inshallah, you'll see, is playing that kind of a role. Not just publication of papers, but showing significant implications of science and the benefits that it provides to nations and to societies and to the world. This is the threshold on which you are standing. Make the best of it. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. Before going onwards, I would like to announce on this platform that in April 2022, we are going to have 7th International Conference on Nanomaterials and Modeling Simulation. Then we'll have 5th International Conference on Energy and Environment in September. And then in November 2022, we're going to have 6th
National Conference on Physics and Emerging Sciences. So hope we see you all on those platforms as well. Now, I would like to tell you about a renowned academician, having Tamgha Imtiaz, who joined Quaid-e-Azam University as Vice Chancellor in 2018. He brought his vast experience in higher education and various universities. He is an eminent academician by professional background, having expertise in biological sciences. He is a PhD from USA or University of Wales, UK, and postdoc from USA, earning 19 national awards and Best University Teacher Award. The chief guest of our ceremony, Professor Dr. Muhammad Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Professor Dr. Mahmood Hassan Bhatt, our colleague and mentor, Dr. Zafar Ghyas, Dr. Sadiq Hafiz, all dignified faculty, researchers, scientists, students. It's indeed a matter of great honor for me to be part of this closing ceremony. I wished that I could have joined in the opening as well, but I also had some other commitments, so I couldn't join. But on a lighter note, when you are a very close friends for a very long time, all our students, they are very well aware of proxy. हम जब क्लास पढ़ते थे तो हमारी जगह को दूसरा यस सर कह देते। कभी कभार ऐसा होता था कि वो रोल नंबर के हिसाब से वो लड़के की जगह पे लड़की यस सर कह देते। तो फौरी तौर पर टीचर उसको, तो आपके वाइस चांसलर और मेरा चूँकि ताल्लुक बड़ा पुराना है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पे वो नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकता, तो वही become a proxy for each other. तो आज वो कहीं बिजी हैं डॉक्टर साहब, तो इसलिए मैं हाजिर खिदमत हूँ अपने ब्याह पे भी और उनके ब्याह पे भी। मैं डॉक्टर ज़फ़र ग्यास और उनकी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बड़ा मैंने अभी इनका फ्यूचर का प्लान भी सुना। ये बड़ा अग्रेसिव इनका स्केड्यूल है फॉर दी कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में भी आने का इत्तेफाक कई बार हुआ है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है जो आप लोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है, उनके काम को देखने का मौका मिलता है। आप अपनी कोलैबोरेशन डेवलप कर सकते हैं और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, आप लोग नए एरियाज कौन कौन से हैं। जैसे अभी डॉक्टर पाठ ने कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये बहुत बड़ा एरिया आ गया है, और इनोवेशन, अभी डॉक्टर साहब ने बात की इन्वेंशन और इनोवेशन की तरफ हमें अब एज ए इन द एकेडमिक वर्ल्ड हमें टीचर्स की TOR को भी बदलना पड़ेगा, और हमें अब ये सिंपल जो पब्लिकेशंस हैं उससे डिवर्ट करना पड़ेगा कि इनोवेशन पे कितनी वेटेज है इन्वेंशन की। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमने जब मौका दिया अपने असातिज़ा को पब्लिकेशन का, चूँकि हमने TORs उसकी पब्लिकेशन रख दी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर पब्लिश करने शुरू कर दिए। अगर हम टारगेट को बदल देंगे, नई जनरेशन भी यहाँ मौजूद है, और अब हमें फोकस करना है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का आदमी हूँ, मैंने बेपनाह काम नैनो मटीरियल्स पे किया है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च का ज़माना आ गया। ये जो आप अगर एक डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहे हैं तो फिर वो उसमें बड़ी मोनोटनी आ जाएगी। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी आप ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हम बनी नौ इंसान को इन्वेंशन की भी ज़रूरत है, इनोवेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर बड़ी नौ इंसान होगी तो इन्वेंशन और इनोवेशन होंगी ना। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है। कोविड आ गया और अब ओमिक्रॉन आ गया, तो दी वेरी सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड इज अंडर क्वेश्चन। COP26 हुई और उसमें एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है।
ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ہم فوڈ سیکیورٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہمارا پینڈیمکس ہیں دنیا میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور ہم سب سے پہلے تو آر وی اویئر آف دس نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی, اور پھر ہم کچھ اس کے لیے انفرادی طور پہ کچھ کر رہے ہیں, اجتماعی طور پہ کچھ کر رہے ہیں. آپ کے اپنے فیل کا ہے, یہ ابھی بوتل پانی کی یہ پڑی ہے 500 ml کی بوتل پانی کی, اس میں سے میں نے تھوڑا سا پانی پیا ہے اور اس کو میں چھوڑ کے چلے جاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا ارسپانسبلٹی ہے. اس میں پلاسٹک ہے, اس میں پانی ڈرنکیبل ہے, اور وہ پانی کو ڈرنکیبل بنانے کے لیے انرجی اس میں استعمال ہوئی ہے. آپ نے بجلی لگی ہوگی, باقی چیزیں لگی ہوں گی, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ منرل واٹر میں کنورٹ کیا ہوگا. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پروسیسڈ کلین واٹر ضائع قوم کرتی ہے وہ پاکستانی. کین یو بلیو دس؟ ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, 1.5 لیٹر کی بوتلیں کھولتے ہیں, اس کو پھینک دیتے ہیں. سو ہمیں اپنی انڈیویجول لیول پہ جو پریکٹسز ہیں, اور یہ پلاسٹک از اے تھریٹ ٹو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی. پھر اس کے بعد یوز آف انرجی, ہاؤ کین وی یوز, جیسے ڈاکٹر صاحب نے رینیویبل انرجی کی بات کی, آپ اسموگ کو دیکھیں, آپ فاگ کو دیکھیں. سو سم تھنگ از گوئنگ آن رانگ, and that is primarily because of the anthropogenic activity. ہم کر رہے ہیں جو سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہمیں ملی ہے, ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے یا تو اس زمین کو اس سے بہتر چھوڑ کے جائیں, یا ایٹ لیسٹ اس طرح چھوڑ کے جائیں جیسی ہمیں ملی ہے. بٹ اٹس ناٹ ہیپننگ. 1.5 ڈگری ٹیمپریچر کا انکریز ود ان دس سینچری اگری نہیں ہوا. اور یو کین امیجن کہ what will happen if the temperature rises from 2 degrees within this century. تو یہ جو گلوبل وارمنگ ہوگی, جو طوفان آئیں گے, جو کہ سونامیز ہوں گے, وہ unpredictable ہیں. Therefore this is for all of us to be awakened. آپ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, وہ ڈاکٹر صاحب نے تو اقبال کی شاعری سنائی. ہمارے ہاں سرائکی میں شاکر شجابادی ایک بڑا اچھا شاعر ہے, اس کا کلام ہے کہ کملے ہاسے تچنگے ہاسے شعور آیا ہے اداس تھے. سو آپ کو شعور آئے گا تو آپ اداس ہوں گے, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کو آپ دیکھیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور پھر آپ ریئلائز کریں کہ کیا میں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں, کیا میں اپنی سوسائٹی کے اندر جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے اس تعلیم کو پھیلا سکتا ہوں. تو اس لیے ہمیں سائنس, ٹیکنالوجی, انوویشن, انوینشن, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, particularly to fight against this non-traditional threat to the mankind. یہ انسانیت کے لیے تھریٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی لائف سٹائل ہی بدل گئی ایک وائرس کی وجہ سے. ہاؤ وائرولوجی ہیز بیکم سو امپورٹنٹ. اور یہ جو نینو سائنس ہے, یہ میڈیکل سائنس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے for the diagnosis of the diseases, for the treatment of the diseases. آپ اس کے سائڈ افیکٹس کو کام کر سکتے ہیں. It can do wonders. لیکن یہ آپ لوگوں کا یہاں اکٹھا ہونا, اور یہ بڑا ایک زبردست جو ہے وہ آپ لوگوں کی کوشش ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کانفرنسز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آپ پیسے ضائع کرتے ہیں. میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. If you want to have a 1 hour of experience, you can go and see somebody. You can have 10 hours of experience, 100 hours of experience. But if you want to have 1,000 hours of experience, go and attend a conference, a scientific conference, جس میں آپ بہت سارے لوگ, جیسے ہماری ہوسٹ بڑا جذبات سے کہہ رہی ہیں کہ میں جون میں ملتان آؤں گی. جون میں تو ہم خود نہیں ملتان جاتے, انہوں نے کیا آنا ہے, ہمارا گھر ہے. ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں بی بی جون میں ملتان جانا, آم تک کھاؤ گے, واپس جب آؤ گے تو پھر بیٹھا گے. ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ وہ
बेमौजज़ा कौमों में बेमौजज़ा दुनिया में बदलती नहीं कौमें और मौजज़ा जापान से बाहर नहीं निकला। क्या जाने वो गिरगत कागान का मौसम जो शख्स कभी मुल्तान से बाहर नहीं निकला। अभी मैं ये डॉक्टर साहबा की जो यूनिवर्सिटी है उसके सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर हूँ मैं परमानेंट। तो हफ्ता इतवार को वहाँ सिलेक्शन बोर्ड था, तो वो हफ्ते इतवार को वहाँ गर्मी थी, इधर हम ठंड से ठिठर रहे हैं। तो जनाब आप तशरीफ लाइए, हम आपको आमों के टोकरे देंगे, आप आए तो सही। लेकिन भारत अगर आप जून में कॉन्फ्रेंस कर लें तो फिर ये आ देंगे, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि ना करें जून में, आप भी नवंबर दिसंबर में कर लें। लेकिन ये आपको इस्लामाबाद के मौसम का अभी काफ़ी ठंड का अंदाज़ा हुआ होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। अभी बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा तकलीफ दे सर्दी नहीं है, अच्छी ठंड है। और फिर जो इनकी मेहमान नवाजी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की और डॉक्टर साहब की भी, और हम डॉक्टर साहब वैसे ज़्यादा यहाँ रहना नहीं चाहते हुए कॉन्फ्रेंस अलग ही बनेगा। तो वो लेकिन भारत आपके वाइस चांसलर को भी हम बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि उन्होंने रिसोर्सेज अवेलेबल किए, पेट्रनेज की, इनकरेज किया आप लोगों को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे मेरे जहाँ मैं पहले यूनिवर्सिटी में था वाइस चांसलर, वहाँ से भी प्रोफेसर आए हैं और बहुत सारे जानने वाले लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर ज़फ़र और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की और आपके वाइस चांसलर को भी वो काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जिसमें आप लोग आए और आप लोगों ने ये मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं, ये डॉक्टर अता साहब हैं, डॉक्टर खुर्शीद हैं। पहले एक दफ़ा मैं आया तो वो खुद आए हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में, और आपके वाइस चांसलर डॉक्टर पाट और फिर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी और अभी डॉक्टर ज़ियाउल कईयों, इनसे पहले भी कुछ वाइस चांसलर्स को मैं जानता था और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और हमारी एक ज़ूलॉजी की कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हुई थी आपके उस हॉल में। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी is setting a tradition not only to be an ODL university but to be a research university as well, which is a wonderful idea, and I appreciate all those people who are instrumental to make this university a leading research university, and for that the efforts of the Vice Chancellor and the Deans and all the people who are involved in the research in this university is highly appreciable. And once again, on my behalf, on behalf of the Vice Chancellor of Iqbal Open University, I would like to thank you all, and would also say that you are always welcome to Allama Iqbal Open University whenever you visit Islamabad. And once again, Dr. Zafar and his team, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे अफ़ताद तहसीन है, और मेरी दुआ है कि आप सारे लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटने वाले बने, और आपका वापसी का सफ़र खैरियत से हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल इत्तेफाक से हमारा एक रात को डिनर पे मुलाकात थी सबकी, डॉक्टर मलिका रानी भी वहाँ पे मौजूद थी, और आपके जून के बारे में जो अल्फाज थे वही इनके दिसंबर के बारे में अल्फाज थे कि मेरी तो कुल्फ़ी जम गई है और दोबारा कैसे आऊँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट सम चीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। सर प्लीज़ आप स्टेज पे आगे आ जाए। We have a shield to present to our chief guest, Professor Dr. Muhammad Ali, by
Professor Dr. Mahmood Hassan Bhatt. Thank you very much, sir. Now we have a shield to present to Ms. Uzma Naveed, Manager, Allied Bank. She has been a very good partner in this conference. And now, our special guest from UK, Professor Dr. Khalid Hafiz. Now we have some shields for our special scientists and researchers, Dr. Ahmad Afan Ghazi. Professor Dr. Salim Iqbal. Professor Dr. Muhammad Ikram Safi. Dr. Adnan Ali. Dr. Ishaq Ahmed. Dr. Malika Rani. Dr. Malika Rani, Dr. Ihsan Ilahi, Dr. Muhammad Azhar Khan. Dr. Muhammad Azhar Khan, Dr. Sardar Sikandar Hayat, Professor Dr. Riaz Ahmed, Professor Dr. Hamdullah Khan. Now we have special prizes for the exhibition, for the students of the exhibition. First prize goes to Asad Ali, Mushtaq Ahmad and Hamza Tahir. Asad Ali, Mushtaq Ahmad and Hamza Tahir. ये थर्ड पोजीशन से शुरू करना चाहिए. Second position goes to Muhammad Zubair Akhtar, Asfaq Khan, Muhammad Zulkarnain. Muhammad Zubair, Maswat Khan and Muhammad Zulkarnain. Third prize goes to Sayyida Nimra Shirazi, Sanomia Anam and Mariam Rashid. For the third prize, Sayyida Nimra Shirazi, Sanomia Anam, Mariam Rashid.
We have some other certificates for two special prizes for Dr. Malika Rani student from University of Multan. Madam, आप receive करें please. Their names are Aruj Fatima and Hadia Batul, and Komal Hussain and Fatma Rehan. They got the special award. And now we have some certificates for our presenters. Sir, आपका शुक्रिया. आने का बहुत शुक्रिया. शायद I think आपका schedule busy है. The rest of the certificates हम exhibition के बाद देते हैं. Thank you.